Hello, students. So, today we will be starting with the Great Indian Desert. In this chapter, we will learn about the location of the Thar Desert, its physical features, and its climate. So, let's proceed. A desert is an area that receives either very little rainfall or no rainfall at all. The Great Indian Desert, also known as the Thar Desert, that stretches from the Gujarat plains in the south to the borders of Punjab and Haryana in the north. To the east lies the Aravalli Range. Now, Aravallis are the oldest mountains in India. The desert. The desert is vast, sandy, and rocky, thus having small hills of sand. These are called sand dunes. There is very little rainfall. River Luni falls through the region, but it has very little water all through the year. Now बच्चे what is a desert? Desert क्या है? वो सैंडी एरिया जहाँ या तो रेनफॉल बहुत कम होती है या नहीं होती है. क्लियर. यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स होते हैं सैंड के और उनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स. रिवर ल्यूनी जो हमारे थार डेजर्ट में है विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट फ्लोज थ्रू दिस रीजन और इसमें पूरे साल बहुत कम वाटर होता है. A people in the olden days used a camel as a transport. Camel is also known as the ship of the desert. Its broad, padded feet help it to walk without sinking into the sand. A camel can go without food and water for many days. This helps it in its travel in the desert. Now jeeps are used in cities. Now ओल्डन डेज में क्या होता था, कैमल जो है वो यूजुअली यूज होता था एज अ ट्रांसपोर्ट, सो इट वाज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. और क्योंकि इसके बहुत ब्रॉड पैडेड फीट होते हैं, लॉन्ग फीट होते हैं, सो दैट इट कैन वॉक वेरी इजीली ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग. ठीक है. इसके अलावा कैमल जो है वो कई दिनों तक बिना फूड और बिना वाटर, एक टाइम पर फूड खा लेता है, प्रॉपर वाटर पी लेता है और कई दिनों तक ये ट्रैवल कर सकता है. क्लियर. नाउ दीज डेज जीप्स आर यूज्ड इन सिटीज. Due to scarcity of water, there are hardly any plants. Plants such as cactus, kikar, and babool, which require little water, grow in the desert. Desert plants are usually thorny. They also have very long roots which reach deep down to tap underground water. Now children, जो आपका डेजर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे जो है वो प्लांट जो होते हैं जैसे कि कैक्टस, कीकर, बबूल होते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट ही बहुत कम पानी की होती है, यही यहाँ पर इजीली ग्रो कर पाते हैं. उसके अलावा जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर वो थॉर्नी होते हैं, कांटे वाले होते हैं, और जो उनकी रूट्स होती हैं बहुत नीचे तक होती है. दे यूज टू हैव टैप रूट वी हैव डन अर्लियर, ताकि ये अंडरग्राउंड वाटर को suck कर सके. Clear? So that plant can get water. In some places, oases are found. An oasis is a place in the desert where underground water comes to the surface. Date palms grow here, and most villages in a desert are clustered around these oases. नाउ क्या होता है, कुछ जगह डेजर्ट के अंदर कुछ जगह पे ओएसिस होते हैं. ओएसिस क्या होते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है. ठीक है. आप देख सकते हैं ना डेजर्ट में सेंटर में ये अंडरग्राउंड वाटर है.
तो ये पानी वाली जगह है, तो सो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तो इसलिए बहुत सारे जो डेट प्लम्स होते हैं और बाकी जो प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पर ग्रो करते हैं, और इसी के आसपास बहुत सारे विलेजेस भी होते हैं, ठीक है। Now, to solve the water problem faced by the people of the desert, the government has built the Indira Gandhi Canal. This canal gets its water supply from the river Satluj and its tributaries. Now क्या होता है कि आपको जैसे हमें पता है कि यहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ पानी भी बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए गवर्नमेंट ने is helping people. So they made this canal which is called as Indira Gandhi Canal, which gets its water supply from river Satluj और उसकी tributaries क्या होती है, सहायक नदी. The canal has eased the problem of water shortage faced by households and farms, and more land has been brought under cultivation. Crops like wheat, barley, maize, jawar, and bajra are grown here. In fact, this area now boasts of the largest wheat farm in Surajgarh, besides a lot of other crops like maize, barley, jawar and bajra. Now children, जिस तरह से ये कैनाल ने वाटर सप्लाई दिया, तो वाटर सप्लाई से क्या हुआ कि लोगों की डेली प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट की गई. और इसके अलावा कल्टीवेशन क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में किसी क्रॉप को उगाना. तो इससे क्या हेल्प हुई कि बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे इजीली उगने लगी. और आज की तारीख में जो ये लार्जेस्ट व्हीट फार्म है सूरजगढ़ में, दैट इज सिचुएटेड इन राजस्थान ओनली. क्लियर? So Indira Gandhi Canal has solved the water problem faced by the people of Rajasthan, that is a desert area. Many people in the desert lead a nomadic life. They are always on the move, so they are called nomads. The nomads of the Thar desert are called Banjaras. They are good at making things of iron. Rajasthan is also known for its handicrafts and tie and dye. देखिए अब क्या होता है, डेजर्ट में जो ज़्यादातर लोग होते हैं नोमैडिक लाइफ जीते हैं. नोमैडिक लाइफ क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहना. थार डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो नोमैड्स हैं, दे आर नोन एज बंजारास. इसके अलावा वो आयरन की बनी हुई चीज़ें और हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें बनाते हैं. क्लियर? Now, what is the importance of Thar Desert? This region is known for its beauty. Tourists from India and abroad visit it. Their festivals like Tej, Gangor, Pushkar Fair are very lively and enjoyed by all. Their bright colored clothes and jewelry have become world famous. Some important towns in the Indian desert region are Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner, and Udaipur. It has a number of wildlife sanctuaries like Ranthambore, Bhagalpur, and Sariksha. Tigers, panthers, deer, and a variety of birds are found here. The beautiful forts and places built by the Rajput kings also increase the beauty of the place. Now, what about the desert climate? It has extreme climate. It is very hot during the summer and very cold in winter. The sand absorbs heat very fast and cools down just as fast. Rainfall is scanty. Now about the climate, यहाँ extreme climate है. जब summers होते हैं तो बहुत गर्म होता है और winters में बहुत ठंडा होता है. ऐसा क्यों होता है? इसमें ये भी होता है कि जो nights होती हैं वो ठंडी होती हैं और जो आपके days होते हैं वो बहुत hot होते हैं, because sand बहुत जल्दी absorb कर लेती है heat और उतनी ही जल्दी वो उसको cool down कर लेती है heat को. So in desert days are very hot and nights are very cool. और यहाँ पे रेनफॉल जो दैट इज स्केंटी, कमी होती है, हमेशा कम रेनफॉल होती है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.